Hello everyone. Today we are going to talk the last theorem number 11.5 from our chapter number 11 Similarity for class 10th standard from RBSE syllabus. The last theorem 11.3 and 4 both are vice versa or converse of each other, and both are related with the internal bisector or internal bisecting angle of a triangle. Now external bisecting angle we are taking in this theorem, which is the 11.5. So first of all, what is the statement of this theorem? Statement क्या रहेगा इस theorem का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. The given statement of this theorem is the bisecting angle of the exterior angle if a side or a line divides any exterior angle of a triangle in two equal parts. When we will produce one side of a triangle, then it will divide the opposite side externally in the ratio of the remaining two side of the triangle. चलिए अपन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू दिस थियरम आई वांट्स टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. देखो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इसका वैसे थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा. लेट सपोज दिस इज एनी ट्राइंगल ए B C. Clear है? When we will produce a side of a triangle, I am producing side BA up to the point P. Then the exterior angle bisector, ये जो angle bisector बनेगा, ये this will divide the opposite side. तो opposite side को इस point P पे ये Q point consider कर लेता. Q पे इसने इसको divide किया. Then ratio of these part, exterior part BQ and CQ is proportional to the ratio of the side of the triangle which are containing the angle. तो इसमें side AB and AC इन दोनों से एंगल बन रहा है. देखो AB AC और AB, इससे ये एंगल बना है. ठीक है, ट्रायंगल की साइड तो यही रहेंगी, ये तो प्रोड्यूस करने पे मिला हमें. बट बेसिकली दीज आर AB एंड AC आर रूट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल. क्लियर है बात यहाँ तक? इनका जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा. ये हमें प्रूव करना है. पहले चलिए बात करते हैं क्या हमें दे रखा है. गिवन दैट in triangle ABC, in triangle ABC, PAC, angle PAC is any exterior angle clear. Angle PAC is any exterior angle and AQ bisects angle PAC and intersects BC at point Q when BC produced. Clear? In this triangle ABC, PAC is any exterior angle and AQ is the bisector of angle PAC, and AQ divides the side BC at point Q externally when we will produce BC up to the point Q. This thing is given in the question. Clear? Or the theorem. अब हमें प्रूव क्या करना है? To prove what we have to prove. हमें प्रूव करना है the ratio of these two sides which are containing the angle means AB upon AC is equals to AB. This ratio is proportional to the ratio of BQ and CQ. BQ upon CQ, ये हमें प्रूव करना है. अब इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे.
कंस्ट्रक्शन का रूल देखो, मैं पॉइंट सी से ए क्यू के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं. लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट आर. ड्रॉ ए line CR which is parallel to AQ. Got it? Draw a line CR which is parallel to AQ. क्लियर है यहां तक? अब देखो ये सब करने के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, प्रूफ पे चलते हैं. देखो RC is parallel to AQ. RC is parallel to AQ, then this triangle BQA will follow the property of BPT because in this RC is parallel to AQ. So by the triangle or using triangle BQA, from triangle BQA, RC is parallel to AQ. RC is parallel to AQ. Therefore, using BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या थी, एक बार से वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं. इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ ए लाइन in any triangle, a line is parallel to the third side of this triangle and bisect remaining two sides at any point, then the ratio, corresponding ratios are proportional to each other. ये हमें ये थ्योरम थी, मीन्स इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होगा, म्यूचुअली इक्वल होगा. ये बीपीटी थी और मैं यही थ्योरम इसमें अप्लाई करूंगा. यूजिंग बीपीटी वी कैन से दैट BQ BC upon CQ, BC upon CQ is equals to BR upon RA. क्लियर है बात यहां तक? BR upon RA. अब देखो हमें क्या क्या मिल गया. हमें प्रूफ पे चलते हैं. AB मैच नहीं हुआ, AC भी कहीं नहीं मिला, BQ भी मीन्स चारों ही मैच नहीं हो रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू चेंज ऑल दीज थिंग्स. अब देखो हमें चाहिए BQ चाहिए, तो BC में CQ ऐड कर दे. तो मैं दोनों साइड इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर रहा हूं. ऑन एडिंग 1 इन बोथ साइड्स में क्या मिलेगा, BC अपॉन CQ प्लस 1 इज इक्वल्स टू BR अपॉन RA प्लस 1. इज दिस क्लियर? LCM BC प्लस CQ अपॉन CQ इज इक्वल्स टू BR प्लस RA अपॉन RA. क्लियर? BC प्लस CQ, BC plus CQ is BQ upon CQ is equals to BR plus RA. BR plus RA means BA or AB upon RA. Now check how many things are equal. BQ is equal and AB has changed. Now CQ भी मैच हो गया. AC को अपन को ए बी की जगह क्या, आर ए की जगह क्या लाना है, ए सी लाना है. लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ दिस इज द एंगल फर्स्ट, सेकेंड एंड लेट सपोज दिस इज द एंगल थर्ड. इसको कंसिडर कर लेता हूं एंड लेट सपोज दिस इज द एंगल फोर्थ. ये कर लेते हैं अपन, ठीक है. और इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, या फिर एक काम करो, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया. हमें रिलेशन बनाना है AC एंड AR के बिटवीन. AC ये रहा और AR ये रहा, मीन्स हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है एनी हाउ. तो इसको मैं बोल देता हूं एंगल 3 एंड लेट सपोज दिस इज द एंगल 4. ऐसे कोई कंसिडर कर लिया मैंने. नाउ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर
we know that angle 1 is equals to angle 2. It is already given in the question because AQ is the angle bisector. Angle 1 is equals to angle 2 and angle 1 is equals to, sorry, it is given that and we know that what we know, angle 1 is equals to angle 3 and angle 1 is equals to angle 3 because these are corresponding angles. Reason I am writing in front of it, corresponding angles. Next, angle 2 and angle 4 are equal. Angle 2 is equals to angle 4. These are alternate interior angles. Got it? These are alternate interior angles. Now 1 and 2 are equal. 1 and 2 are equal. Then I think that these are also equal. And these are absolutely equal to each other. Angle 3 is equals to angle 4. So therefore angle 3 is equals to angle 4. And what is the meaning of these things? And if angle 3 and 4 are equal, then in triangle ARC these two angles are equal. It means this is an isosceles triangle. क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो वो isosceles triangle होगा. Therefore, so triangle ARC is an isosceles triangle. Angle ARC is an isosceles triangle. Then according to the property of isosceles triangle, we know very well that the opposite side of equal angles are equal in an isosceles triangle. The opposite sides of equal angle, these two angles are equal, then these two sides are opposite to angle 3 and angle 4. It means angle side AR, so AR is equals to AC. AR is equals to AC. छोटा सा पार्ट बचा, मैं यही कहीं सोल्व करता हूँ. यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर second BC upon CQ is equals to BQ upon CQ is equals to AB upon AR is equals to AC. AB upon AC, and this we have to prove. Clear? Now I am repeating again. Theorem number 11.5. The statement of this theorem is the angle bisector of any external angle of a triangle. When we will produce any side of a triangle, it will bisect the opposite side in the ratio which are containing the angles. क्लियर बात? यहाँ तक ये इसका स्टेटमेंट था और हमने ये सभी चीजें लिख दी. ये एक ट्रायंगल दे रखा था. ABC was any triangle in which PAC was the exterior angle and AQ is bisecting angle this one in two equal parts, and these one we have mentioned angle 1 and angle 2, and after it AQ intersect BC at point Q where BC produced up to the point Q. Clear है? ये statement हमें दे रखा था. After it what we have to prove? We have to prove that the ratio of externally of these two sides BC upon CQ is equals to the ratio of the remaining two sides which are containing the angle. So BQ upon CQ is equals to AB upon AC. क्लियर बात है? यहाँ तक ये हमें प्रूव करना था. कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? AQ के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है CR AQ के पैरेलल, तो ये दोनों साइड पैरेलल होगी. एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रूफ में अपन ने क्या डिस्कस किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेलेक्टेड द ट्रायंगल BQA because in this CR is parallel to AQ. So in this we can apply the basic proportionality theorem, and about this theorem we have already discussed in this video also and one previous video also. So these are parallel, then ratio of BC upon CQ is equals to BR upon RA. About this matter we have already known. So this content I mentioned here. Now what I did, I added 1 in both the side
of the equation number first. So BC upon CQ plus 1 and BR upon RA plus 1, and then I took here the LCM, and using the LCM method I got this statement. And after applying the property of the addition, BC plus CQ is equals to BQ upon CQ is equals to BR plus RA is equals to AB upon RA. Now according to the structure, it is also given that these two angles are equal. It means angle 1 is equals to angle 2. Both these angles are equal, but angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4. Reason for behind it, angle 1 and 3 are equal because these are corresponding angle relation between two parallel lines. Similarly, 2 and 4 are equal. These are alternate interior angle in the between two parallel lines. So about this matter I mentioned here, and from here we can make a conclusion. Angle 1 and 2 are equal, then 3 and 4 will also equal to each other. If 3 and 4 are equal, then ARC is an isosceles triangle in which two sides must be equal to each other, and these are the opposite sides of the opposite angles, equal angles. So these two angles are equal, angle 3 and 4 are equal, then opposite side of these two angle AR and AC. So therefore AR will be equal to AC. AR is equals to AC. Then I applied this statement in the equation number second. At the place of AR I substitute AC. Then we got the required result. Clear? I hope so you understood. And in the next video we will start our exercise 11.3 from the very first question. So please pause the video and note it down.